Hello everyone, welcome back to my channel, my lord. This is Sanskruti. I really hope you all are doing well. So as we have seen in my early video that we have taken three general defenses, that is voluntary non-fit injuria, second is act of God, and third is inevitable accident. Now we have moved forward to another four general defenses. So to begin with this, I would really request you all to please subscribe this channel. Please give love and support, as this channel is just growing on this platform. It is very new on this platform. Please show some love and support, and please even press the bell icon also, so the new video will notify you. Thank you. So now let's begin with what do you mean by the private defense? So private defense means any person of this any citizen of this India has a right to protect his property or his person by doing some act, or even by doing that act he is causing some injury to another person, but even that act is not actionable because he was preventing damage to his person or property. Now there are again two conditions for the private defenses. Okay, what are those two conditions? The first condition is use of force will justified only when there is imminent threat to property. Okay, मेरा फोर्स तभी जस्टिफाइड कहलाएगा जब मेरा फोर्स जब कोई थ्रेट मेरे प्रॉपर्टी को है और या तो मेरे पर्सन को है. ओके, मेरा जो फोर्स उसके प्रति रहेगा वो तभी जस्टिफाई बोल सकते हैं अपन कि जब कोई रियली ही इज थ्रेटनिंग टू माय पर्सन और प्रॉपर्टी. किसी भी वजह से मैं कोई बेफालतू उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती हूँ. मैं कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर सकती. Second is the use of force must be in the proportion in which it is necessary in circumstances. Okay, circumstances के हिसाब से ही वो force होना चाहिए. Okay, according to the circumstances वही force होना चाहिए जहाँ वो anticipate करता है. Now for an example, if a person strikes me, so for against that I cannot use sword or gun against him. Okay, that is an excessive force. So what do you mean by this? That there should be no excessive force until you have anticipated it. Now the question arises, that is what and how much force is necessary in the circumstances. Who will decide that? So there is no one who will decide that. It is decided by the facts and the law itself. Okay, there is a case law that Morris versus Nugent that says that the defendant was passing by a plaintiff house. Okay, now during he was passing, his dog started barking, and he came to bite him. Now against this, the defendant targeted him by the gun. Okay, he was about to shoot him, but during that what happened is the dog ran away. But now after some time he came back. Now when he was coming back, the defendant shot him and he was dead. Now it was held that the private defense could not be justified here because he shooted at the dog when he was not attacking him. Okay, there was no harm for him. He was just coming back. Okay, there was no harm at the defendant side. But even though he shoot at him and the dog was dead, so here it was held that the force was excessive because the dog was not attacking him at that time and he shoot him. So he was liable over here. The plaintiff was liable. The defendant was liable over here. Now the second is act of necessity. Now this act of necessity is based on salus populi suprema lex. Okay, the act of necessity is based on the maxim that says salus populi suprema lex, which means the welfare of the people is a supreme law. Okay, that means the greatest welfare is of the greatest member. The main objective of this maxim is just to see the welfare of the people. Now what happened is, here the interest of the self individually sacrificed. Okay, यहाँ पे जब खुद का इंटरेस्ट हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी.
यहाँ पे बेसिकली व्हाट हैपेंड इज any harm, any act that is caused to prevent some greater damage. Okay, कोई भी बड़ा एक हार्म और डैमेज को आप प्रिवेंट करने के लिए जब कोई हार्म करते हो, ठीक है, इवन तो उसके वजह से कोई दूसरों को हार्म हो जाए, तो इवन आफ्टर दैट इट इज नॉट एक्शनेबल, इट विल बी नॉट हेल्ड लायबल फॉर दैट. Let's take an example. If my neighbor houses has catch a fire, अगर मैं जाती हूँ वहां पे पानी to pour some water over fire. Now during that मेरे पानी मेरे हिस्से से जो पानी जा रहा था उसके वजह से अगर कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज हो भी जाता है, तो I'll be not held liable for that because I was doing that act to prevent some major damage. वहां पे आग लगी हुई थी, उसकी वजह से मैं पानी आग में डालने की कोशिश डाल रही थी ताकि वो आग ज्यादा फैले नहीं. ओके, उसकी वजह से कुछ पानी डालने से कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या वो मेरे को लायबल बोल सकता है? नहीं, बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट एक्ट विच वॉज प्रिवेंटिंग अ ग्रेटर डैमेज ओवर देयर. ओके, सो इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ नेसेसिटी. बेसिकली दिस इज जस्ट एन एक्ट that you're doing to prevent a greater damage. Now while doing that act, अगर उससे किसी और को हार्म हो जाता है या किसी को तकलीफ होती है, even though that person could not held liable, that person cannot sue you for this, he cannot compensate from you. So the next is mistake. Mistake means ignorance of law is no excuse. This maxim means that even after the mistake has done, the mistake cannot be justified whether it is of fact or the law that has taken for the action for the tort. It means when a person interferes with the right of the another person, he cannot take this defense. Okay, that cannot be justified. So for an example, if a person enters my premises assuming that this premises belongs to him, it will be an action for a trespass. Let's take an example with the case law, that is consolidated versus Curtis. Here what happened is an auctioneer was given certain goods, okay, by his customer. Now what happened is the customer which gave him goods for the auction to the auctioneer. Now the auctioneer believed that these goods were truly belonging to his customer. Okay, so assuming that he began with the auctioneer procedures, he sold that goods also. But now later on, the matter disclosed was that these goods were not belonging to his customer, but that goods was belonging to some another person. Okay, now the true owner of this goods, he has complained a defense of conversion. Okay, now it was believed that the court appealed that here the auctioneer was not aware of the true generosity. He was not aware that these goods were belonging to whom. So basically here he was liable for this. Now there is an exception to this mistake. What is the exception? Exception हम कैसे बोल सकते हैं? Now to these rules there are certain exceptions where a defendant can avoid his liability. So what is that liability? Let's take an example like if it is proof that a person, okay, now there is a person of an ordinary pretense, okay, he has proved that in the same circumstances even the defendant even the plaintiff could acted in the same way like the defendant has proceeded. Okay, इधर हम एक्सेप्शन क्या बोल सकते हैं कि अगर एक ही जिस एक्ट में उसने जो एक्ट किया है, ओके, द सर्कमस्टेंसेस में उससे जो एक्ट हुआ है, वही सेम सर्कमस्टेंसेस में अगर वो उससे हो जाता तो नाउ इन दिस केस ही कैन अवॉइड हिज लायबिलिटी ओवर हियर. लेट्स अलाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर प्रोसिक्यूशन में अगर जहाँ पे प्लेंटिफ करता है इनिशिएट, वहां से अगर डिफेंडेंट ही इनिशिएट कर दे
कि भाई मेरी यहाँ पे कोई ये नहीं थी, नेग्लिजेंस नहीं थी, मैंने सारे रीजनेबल केयर लिए थे, इवन आफ्टर दैट ये चीज मेरे यहाँ से हुई। सो द डिफेंडेंट, इफ डिफेंडेंट इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन, ही कैन अवॉइड हिज लायबिलिटी अंडर दिस। ओके, नाउ द next is statutory authority. Statutory authority, as I said earlier also, those acts which are passed by the legislature itself, okay, that cannot be said actionable. Okay, जो भी एक्ट्स अगर एक अथॉरिटी के अंडर से गुजरे हैं, जो अथॉरिटी के थ्रू हुए हैं, आप उसको लायबल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ रेलवे ट्रैक्स हो गए या ट्रेन आप मतलब आपके घर से कोई ट्रेन पास होती है, ठीक है, तो आप उनको लायबल नहीं बोल सकते, बिकॉज दीज ऑल एक्ट्स कम अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उनके पास अथॉरिटी होती है, इवन आफ्टर वो चीज होने से दूसरों को हार्म हो रहा है, इवन दो आप उनको लायबल नहीं बोल सकते, बिकॉज दे हैव सम पावर, दोज पावर आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। ओके, आप उसको लायबल नहीं बोल सकते हैं। Now there are again two types of authority. First is absolute authority and conditional authority. Absolute authority means those acts which are passed under the legislature. Okay, you cannot take a action against it. That is called absolute authority. Conditional authority means those authority which you have given the permission, but on the condition that by doing that process, it should not cause harm to the another people. Okay, conditional authority तब दी जाती है, conditions पे authority दी जाती है। conditional authority itself means कि कुछ conditions होती है तब आपको authority दी जाती है। Let's understand with the example, Metropolitan Asylum District versus Hill. Here what happened is the municipal corporation has given the authority to construct a smallpox hospital. Okay, now they started constructing this hospital in the residential area. Okay, now the appellants who were residing nearby that they have filed the complaint that due to the constructing of this hospital, it can cause the infection, it can be spreading of the infection among them. Okay, so what happened is they appealed in the court. Now they appealed that this was a nuisance. Okay, that they were constructing this hospital nearby residential area, so it was causing a nuisance over it. So now it was held that this cannot be held liable because this was coming under the authority. This was coming under the conditional authority. What was the conditional authority means? That means they have given this authority by one condition, that it should not cause nuisance to another people. Okay, but due to which the appellants came and they said that ये हॉस्पिटल बनने से वो इन्फेक्शंस है वो उनको भी हो सकते हैं, उनके बच्चों को भी हो सकते हैं, सो दिस वाज अ कंप्लीट न्यूसेंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप किसी इंसान को तब लायबल नहीं बोल सकते कि एक पॉसिबिलिटी पे, कि हाँ अगर हम हॉस्पिटल यहाँ पे कर रहे हैं तो इससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, यू कैन नॉट हेल्ड अ पर्सन ऑन द पॉसिबिलिटी ग्राउंड्स। ओके, सो नाउ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में हमने दो देखा, दैट वाज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। सो इस वीडियो में हमने 4 डिफेंसेस लिए हैं, दैट इज प्राइवेट डिफेंस, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, मिस्टेक एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो प्राइवेट डिफेंस में हमने देखा कि कोई भी इंसान जब अपने पर्सन को और अपने प्रॉपर्टी को जब बचाने की कोशिश करता है और उस ड्यू टू विच if it is causing harm to another people, it cannot be actionable. Again, there are 2 conditions in it. What are those conditions? Use of force will be justified only when there is imminent threat to the property. Second क्या है, the use of force must be in the proportion in which it is necessary in the circumstances. First क्या बोलता है, मेरा फोर्स तभी जस्टिफाई होगा अगर सही में कोई मेरे प्रॉपर्टी को थ्रेट है। सेकंड ये बोलता है कि जो मेरा फोर्स है वो जस्टिफाई होना चाहिए, वो एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर मेरे को कोई फुटपाथ में अगर मैं चल रही हूँ, अगर कोई मेरे से टकरा गया तो मैं उसके अगेंस्ट गन यूज नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज एन एक्सेसिव फोर्स। ठीक है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, सेलिस पॉपुलि सुप्रीमा लेक्स, दिस मीन्स जस्ट एन वेलफेयर ऑफ द पीपल, दिस मैक्सिम इज देयर इज अ वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट इज अ सुप्रीम लॉ to prevent a greater damage. Okay, is called the act of necessity. Next is mistake. Mistake means ignorance of law is no excuse. आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जहाँ आपको पता है कोई मेरे
प्रीमाइसिस में आ रहा है, अगर ये समझ कर आ रहा है कि वो उसका ही प्रीमाइसिस है, ओके, सो दैट इज एन एक्शन ऑफ ट्रेसपास, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में हमने अभी देखा कि अगर कोई भी एक्ट्स ऐसी एक्ट्स जो हो रहे हैं जो अथॉरिटी के अंदर आते हैं, दे आर नॉट एक्शनेबल। उसमें भी दो है, वी हैव सीन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। एब्सोल्यूट में हमने देखा कोई भी अगर ऐसी चीज अगर जो हो रही है जो अथॉरिटी के अंदर आती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंदर आती है, इट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। कंडीशनल अथॉरिटी में हमने देखा वो एक्ट्स, वो आपको जो एक्ट्स मिल रहे हैं, आपको जो परमिशंस मिल रही है, वो कंडीशंस पे मिल रही है। व्हाट आर दोस कंडीशंस? दैट इट शुड नॉट कॉज हार्म टू अनदर पीपल। So this was our whole video. The concept was today was the 4 defenses that we took. So I really hope that you have loved this video, you have understood this concept. इसके पहले के जो हमने वीडियोस जो डिफेंसेस लिए थे उसका डिस्क्रिप्शन में मेरे जो इसमें रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसके आपकी लिंक शेयर कर दूंगी। आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट वॉच दैट। सो उस बेस पे आपको ये वीडियो समझ आएगा, ओके। सो यस, सो इसके आगे का वीडियो, हम इसके आगे के जो डिफेंसेस है उसको हम लेकर जरूर आएंगे वेरी सून। यू कैन सी द नेक्स्ट डिफेंसेस इन द अपकमिंग वीडियो सून। सो आई रियली होप यू हैव लाइक्ड एंड लव दिस वीडियो. If you have really liked this video, please subscribe to our channel.